एवरीवन, आज हम लोग जीनोबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो जीनोबायोटिक्स आर मेनली फॉरेन बॉडीज। सो दे आर द हार्मफुल केमिकल एजेंट्स दैट एंटर अस थ्रू इंजेक्शन, इनहेलेशन और स्किन कॉन्टैक्ट। सो इस मेटाबॉलिज्म में लिवर मेनली इन्वॉल्व है एंड द अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व आर किडनी, स्किन. So there are two phases of metabolism, phase 1 and phase 2. Phase 1 involve oxidation, reduction and hydrolysis, and phase 2 involve conjugation, acetylation, methylation. Conjugation with glucuronic acid, glycine, cysteine, sulfate, thiosulfate or glutathione. So in phase 1 hydroxylation, it is the major reaction involved and it is catalyzed by monooxygenase or cytochrome P50. P means pigment and 450 means that the enzyme absorbs light at 450 nanometer. So sometimes this phase 1 metabolic reaction convert inactive metabolite in biologically active compound. मीन्स जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो और ज़्यादा टॉक्सिक बन जाएगा. इन केस ऑफ मीथेनॉल इट विल फॉर्म फॉर्मिक एसिड विच इज़ मोर टॉक्सिक. देन इन केस ऑफ फेज 2 with conjugation with glucuronic acid, the example is bilirubin, which forms bilirubin diglucuronide and UDP. Next is cysteine. So bromobenzene with acetic acid will form bromophenyl mercaptouric acid, and glycine with benzoic acid will form hippuric acid. Salicylic acid, it will form salicylic acid. With nicotinic acid, nicotiniuric acid. Cholic acid, glycolic acid, and with deoxycholic acid it will form deoxyglycolic acid. In case of glutathione, it will use the enzyme S transferase, and in case of sulfate we have PAPS, phosphoadenosyl phosphosulfate, which is active sulfate, and it will form sulfated xenobiotic. In case of thiosulfate, we have thiosulfate sulfur transferase. The drugs that undergo acetylation prior to excretion are sulfa drug, anti-TB drug which is isoniazid, and PABA, para-aminobenzoic acid, and it uses the enzyme acetyl transferase. In case of methylation, we have SAM, S-adenosyl methionine, which is a methyl donor, and estrogen is O-methylated, and pyridine and nicotinic acid is N-methylated. Now how this xenobiotic acts as a disease, ये जो foreign body अंदर गई है इससे disease अब कैसे होगा. So this xenobiotic will form reactive metabolite which will bind to a macromolecule by covalent binding. अब ये क्या करेगा, या तो म्यूटेशन करवाएगा, ultimately lead to cancer, या ये सेल इंजरी करवाएगा, और इट विल कॉज एंटीबॉडी प्रोडक्शन विच विल कॉज ऑटो इम्यून डिसीज़, और या ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन डिसरप्ट करेगा जिससे एटीपी कम होगा एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ जाएंगे एंड फ्री रेडिकल्स भी बढ़ जाएंगे, एंड इट विल कॉज अपोप्टोसिस, इन्फ्लेमेशन एंड कैंसर. थैंक यू.